तो वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव. ठीक है, तो we'll find out the energy in electron volts. The energy in electron volts is 13.6 electron volt per atom. Then we'll convert this into kilocalories. ठीक है, ये conversion याद रख सकते हैं. 1 electron volt per atom is approximately 96.5 kilojoules per mole, which is approximately 23.08 kilocalories per mole. Clear है question number 20? Is this clear? Thanks for reminding, Swam. Thanks for reminding to record. ठीक है, I tend to forget. ठीक है, तो do remind me at the start of the lecture to start the recordings. ठीक है, I'll update all these recordings in the YouTube playlist. So it will be easier for you to access that. ठीक है, I have shared the link of the YouTube playlist. ठीक है, so you can access all these lectures from the YouTube playlist. ठीक है, next doubt, question number 27. ये remove कर दूं मैं? Shall I remove this? ठीक है, next doubt is question number 27. Any other doubt before question number 27? बाकी 2-3 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कर लिया था. ठीक है, average lifetime of a hydrogen atom excited state in the n equal to hydrogen atom excited to n equal to 2 state. ठीक है, average lifetime of a hydrogen atom excited to n equal to 2 state is 10 to the power minus 8 second. पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं. आई थिंक इसी स्टेटमेंट में डाउट है बहुत लोगों को. वीरो के ये स्टेटमेंट में डाउट है क्या? ठीक है, तो पहले ये स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं. एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड टू n इक्वल टू 2 स्टेट इज 10 raised to minus 8 सेकंड. एक्चुअली क्या होता है, whenever we excite electron from the ground state to high energy states, whenever an atom goes to its excited state, that means electrons in that atom are excited from ground state to high energy levels. ठीक है, electrons are not stable in the excited states. Electrons are not stable in the high energy states. So any atom, any species is not stable in its excited state. It always tends to attain the ground state. So 10 to the power minus 8 second is the lifetime of hydrogen atom in the n equal to 2 state. मतलब कि for only this much time electron can stay in the second orbit. ठीक है, and then electron will fall back to the ground state. So whenever we excite electrons to high energy state, electrons, because they are not stable in their higher energy states, they will always tend to fall back to the lower energy levels. They always tend to fall back to the ground state. ठीक है, so this statement says that lifetime is 10 to the power minus 8 seconds in n equal to 2 state. That means for this much time it will remain in the second orbit and then it will fall back to the ground state. ठीक है, understood? ये स्टेटमेंट का मतलब समझा सबको? Avanti, understood? Question number 27, this first statement. Very good. ठीक है, now what we have to find out? Find the number of revolutions made by the electron before it jumps to the ground state. ठीक है, we know the formula to calculate number of revolutions per second. Number of revolutions per second is frequency of revolution. This is equal to v by 2 pi r. ठीक है, this is equal to v naught upon 2 pi a naught, v naught upon 2 pi a naught. ठीक है, ये आ जाएगा z स्क्वायर बाई n क्यूब. ठीक है, this is the frequency of revolutions per second, number of revolutions per second, and total time, ठीक है, is 10 to the power minus 8 second, because इतने ही टाइम तक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में रहता है. So total number of revolutions in 10 to the power minus 8 seconds will be 10 to the power minus 8 seconds into f. F is equal to v naught upon 2 pi a naught into z square by n cube. Can we solve it right now? अभी solve हो जाएगा. Values put कर दो v naught की. एक सेकेंड.
This is 10 raised to minus 8. V naught is 2.18 into 10 to the power 6. 2 pi A naught is 0.529 angstrom. The angstrom is 10 to the power minus 10. Z square hydrogen atom n cube 2 cube. ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे, ये 10 रेस टू माइनस 10, 10 रेस टू 8, 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, दैट इज 100. ठीक है, तो 2.18 है, सॉरी, हो जाएगा अभी ये. दिस इज 2.18 upon 2 pi into 0.529 into 2 cube is 8 into 10 to the power 8. ठीक है, we can write it as 218 into 10 to the power 6. अभी सॉल्व कर लेते हैं. 218 divide by 2 pi. Let us take pi as 3.14. तो अप्रोक्सीमेटली 8 आ जाएगा ये. तो 8.2 आ जाता है. तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8.2 इंटू 10 टू द पावर 6. कितना आंसर दिया है? व्हाट इज द आंसर गिवन? वीरो के फॉर्मूला भूल गया. ठीक है, रिवाइज दी नोट्स प्रॉपरली. जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 4 फोर्स में आता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन में नहीं आता है. ठीक है, व्हाट इज द आंसर गिवन इन द बुकलेट? पीछे आंसर दिया होगा ना. हमारा कितना आ रहा है? 8.2 इंटू 10 टू द पावर 6. इज इट मैचिंग विद द आंसर गिवन इन द बुकलेट? फाइन, गुड. ठीक है, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट इन फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव? ठीक है, नो अदर डाउट इन फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव? So let me proceed ahead with the theory. Is everyone solving it? सब सॉल्व कर रहे हैं ना? ठीक है, let me continue with the theory. लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम जस्ट स्टार्ट किया था. वी हैड जस्ट स्टार्टेड विद स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम बस डिफाइन किया था. ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, ये वाला पार्ट किया था. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. And discontinuous spectrum can be of two types, line spectrum and band spectrum. ठीक है, तो इसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ.
Any other theoretical doubt which you like to ask? इससे related? Bohr's model और इससे related? ठीक है. Why do we have less attendance today? Normally we have 37 participants, 36, 37 participants. We have only 33 participants today. I think this is the first week where you are having lectures after 12 also, na? Every day you are having 3 lectures, na, these days? And your school has started? Alternate day school. TTS is a pace and Monday to Wednesday, Friday is school. Okay, fine. Do you have any rule for attendance in the school? That this much 75% attendance or 80% attendance? Such कोई rule है क्या? No idea. ठीक है. But how will they check? Even if there is a rule, it's very difficult to keep a check. A student has joined. ठीक. ठीक है, तो let me proceed. ठीक है, types of spectrum on the basis of nature of spectrum we have done. Now we'll do types of spectrum on the basis of the source, the light source which we are using. Okay, so we'll start with atomic structure, lecture 11. This is the lecture 11, na? Atomic structure, lecture 11. Okay, next topic is types of spectrum based on the source. 1 second. ठीक है, तो types of spectrum based on the source. Based on the nature of source. This is also an important classification. ठीक है, एक है emission spectrum, एक है absorption spectrum. ठीक है, स्पेक्ट्रम का प्लूरल स्पेक्ट्रा है, तो कभी कभी एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, it is the spectrum of emitted radiations from a sample.
It is the spectrum of emitted radiations from a sample. And absorption spectrum is the spectrum of absorbed radiations from a sample. Explain करता हूं मैं next page पे. Absorb radiations by a sample. Radiations absorbed by a sample. इसको ऐसे लिख लो. 1 second. ये हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुकना. Absorbed radiations or radiations absorbed by a sample. ऐसे लिखो. थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ स्टेटमेंट को. It is the spectrum of radiations absorbed by a sample. ठीक है. तो next page में let me explain the emission and the absorption spectrum. टर्न करूं. Okay. If you want to message, please message me on the host, not on the co-host. Because co-host में बस screen share कर रहा हूँ. I'm not accessing the chats on the co-host. Next देखो. Let me explain with example with the actual setup used for absorption and emission spectrum and how these spectrum look like. ठीक है. तो सबसे पहले emission spectrum. जनरली emission spectrum हम एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का किसी भी सब्सटेंस का ले सकते हैं. सब्सटेंस में भी एटम्स और सब्सटेंस में भी मॉलिक्यूल्स. ठीक है. इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो विल डिस्कस दैट इन डिटेल्स. बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम काफी इंपॉर्टेंट है. तो कैसा सेटअप होता है जहां पे हम हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं. देयर इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब and within this tube we have hydrogen atoms. Hydrogen atoms can be obtained by heating hydrogen gas to a very high temperature. By heating hydrogen gas to a very high temperature we can get hydrogen atoms. Now across these two metal plates we apply a very high voltage. इसको ऐसे लिख सकते हैं. 1 सेकंड रुकना. It contains hydrogen atoms and a very high voltage is applied across these two metal plates. Not as high as in the cathode ray experiment, but 20, 30, 40 volts high voltage is applied. Okay. And the sample contains hydrogen atoms or any other atom for which or molecule for which emission spectra is to be measured, emission spectrum is to be observed. Suppose it contains hydrogen atoms.
तो होता क्या है, when we apply very high voltage or sometimes when we heat the sample to a very high temperature, so either on heating to a very high temperature or applying very high voltage, we supply some energy to those atoms, ठीक है, or the molecules present in the sample, ठीक है. On absorbing these energy, on absorbing the thermal energy or the electrical energy supplied in the form of high voltage or the thermal energy supplied in the form of heat, ठीक है, the atoms in their ground states absorb that energy. Effectively the electrons absorb those energy and the electrons get excited to high energy level. So all atoms which were initially in the ground state, they are excited to high energy states by absorbing the thermal energy or the electrical energy supplied in the form of high voltage, thermal energy supplied, okay, in the form of heat. So these hydrogen atoms get excited to high energy levels. Energy levels by absorbing the electrical energy supplied in the form of high voltage. क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर है? Now what happens, these excited हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त बताया था मैंने कि any atom or any substance is not stable in its excited state. It has a tendency to go back to its ground state. So electrons in the high energy levels are not stable. They will spontaneously then now fall back to the low energy states. And when these electrons fall back to low energy states, okay, photons will be emitted, some radiations will be emitted. So whenever we heat the hydrogen atoms or supply high voltage or expose these hydrogen atoms to a high voltage source, okay, the electrons of the hydrogen atoms get excited to high energy levels. These excited electrons, when fall back to low energy states, start emitting some radiations. Okay, we'll write this point. These excited these excited atoms, the electrons in these excited atoms, when fall back to when go back to the lower energy states, that is ground state, some radiations are emitted. Okay. This is the principle of light that is being emitted from a bulb or fluorescent lamps. Neon lamps सुना है ना, neon lamps, sodium vapor lamps. तो सोडियम वेपर लैम्प्स क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स जो येलो कलर के लाइट्स होते हैं, दे आर मोस्टली सोडियम वेपर लैम्प्स. तो एक ग्लास का इनक्लोजर जैसा बना होता है, दैट इज फिल्ड विथ सोडियम वेपर्स, ठीक है, दैट इज फिल्ड विथ सोडियम वेपर्स और लो प्रेशर होता है उसके अंदर ताकि सोडियम वेपर्स एग्जिस्ट कर सके, ठीक है. जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सोडियम सोडियम सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव सोडियम वेपर्स. तो अंडर वेरी लो प्रेशर्स, ठीक है, ग्लास के अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर एनक्लोजर के अंदर हम सोडियम वेपर्स रखते हैं. फिर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू इट, it results in excitation of sodium atoms to high energy levels, excitation of electrons of sodium atoms to high energy levels, and those excited electrons when fall back to low energy levels, ठीक है, start emitting some photons, और सोडियम में येलो कलर की लाइट एमिट होती है. तो सिमिलरली, ठीक है, इन एवरी सैंपल, ठीक है, whether it contains sodium atoms or neon atoms or hydrogen atoms, ठीक है, whenever heated or subjected to high voltage, it will start emitting some radiations. तो इट्स अ कंटिन्यूड प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया, एक फोटोन एमिट हुआ, ठीक है, बट वापस ग्राउंड स्टेट से वापस वो एक्साइट हो सकता है. हाउ कैन इट बी एक्साइटेड? बिकॉज
जब तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कनेक्टेड है तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं. Electrical energy is continuously being supplied. It is being absorbed by electrons in the ground state to go to the high energy states. Electrons are then falling from high energy state to low energy state, emitting photons. It's a continued process. तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है तब तक इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे. Those excited electrons will keep falling to the low energy levels and it will keep emitting some photons. ठीक है, अंडरस्टूड है ये प्रोसेस? आ रहा है समझ में? Fine. So what happens? This starts emitting some radiations. Now we have to study these radiations. कौन कौन से वेवलेंथ का फोटोन एमिट हो रहा है, कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा है. ठीक है, हाउ टू स्टडी दैट? विल अलाउ दीज रेडिएशंस टू फॉल ऑन अ प्रिज्म. Will allow these radiations to fall on a prism. These will split into different wavelengths. Dispersion will take place. And these dispersed radiations will allow to be fall on a photographic film. This is a photographic film. ये प्रिज्म है, ये फोटोग्राफिक फिल्म है. इस फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या होगा? Corresponding to the radiations that are emitted by these hydrogen atoms will get some lines. Okay, corresponding to only those photons which are being emitted by the sample will get some lines. Suppose these are lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, etc. ठीक है. So this spectrum, emission spectrum, often appears as a line spectrum. Emission spectrum often appears as a line spectrum. Clear emission spectrum सबको? What is emission spectrum? अंश, आदित्य, अर्श, समझ रहा है ये? आर्यन, Anya, we have two Anya here, Anya Porwal and Anya Singh. आ रहा है समझ में? गुड, वेरी गुड. ठीक है, नाउ विल एक्सप्लेन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. टर्न करूं पेज? Okay, I'm waiting. Do it, note it down quickly. The emission spectrum is the spectrum of emitted radiations from a sample, and a sample will emit some radiations when a sample is excited to high energy levels. Okay, and sample may be excited to high energy levels by either heating it to a very high temperature or by supplying high voltage to it or by applying high voltage across it. Next, देखो. Next, let me explain the absorption spectrum. Absorption spectrum थोड़ा सा different है. We take a source of white light. White light is a symbolic term. What does it signify? कोई बताएगा? It's not कि white light मतलब white color का light. White light is a symbolic term. Can anyone say what is white light? मोनोक्रोमैटिक नहीं,
गलत बोल दिया तूने, ठीक है। व्हाइट लाइट इज अ सिंबॉलिक टर्म फॉर अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, विच कंटेन्स ऑल डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। विजिबल लाइट के कंटेक्स्ट में ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर के सारे कलर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो व्हाइट लाइट इज अ सिंबॉलिक टर्म, इसका मतलब अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, which has a continuous spectrum, which has a continuous spectrum मतलब which contains all the different wavelengths present, ठीक है। तो white light is something which has all different wavelengths, contains all the different wavelengths। केवल व्हाइट लाइट का अगर स्पेक्ट्रम लेंगे तो इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा? इट्स स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम नोट मत करना, मैं थोड़ा चेंजेस लाऊंगा लास्ट में, बस मैं सपोज के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डायरेक्ट इस व्हाइट लाइट का मैंने अगर स्पेक्ट्रम लिया तो कैसा स्पेक्ट्रम आएगा। ये प्रिज्म है, ठीक है। द लाइट विल बी इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, इट विल बी dispersed, on dispersion we'll record this on the photographic film, and when we'll record this on the photographic film between these two wavelengths, ठीक है, it will get a continuous spectrum, will get a continuous spectrum, continuous spectrum आ जाएगा between these two wavelengths। सपोज एक मैक्सिमम और मिनिमम का रेंज है, ठीक है, उस रेंज के अंदर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा। तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम अगर लेंगे तो द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। It will appear somewhat like this. Don't note it down right now, मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करेंगे कि बिटवीन द प्रिज्म and the source of the white light we put the sample for which absorption spectrum is to be measured, ठीक है। इन दोनों के बीच में we'll put the sample for which hydrogen spectrum or absorption spectrum is to be measured। तो यहाँ पे भी एक ट्यूब लेंगे, tube will be filled with hydrogen atoms, no voltage is applied, the sample contains hydrogen atoms in ground state, okay। Normally a high intensity light is used, we use a high intensity light, source of white light, a high intensity light, ठीक है। तो source of white light is absorbing, oh sorry, it's emitting all the photons, ठीक है। And when these photons are incident on the hydrogen atoms in the ground state, these photons are allowed to pass through hydrogen atoms, when these photons are allowed to pass through the hydrogen atom, होता क्या है, some of these photons are absorbed by hydrogen, not all, but some of these photons are absorbed by hydrogen। which photons will be absorbed, ठीक है, only those photons will be absorbed whose energy correspond to the difference in energy levels of the hydrogen atom, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटम में E1 की एनर्जी है -13.6,
E2 की एनर्जी -3.4, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2. So the photon of 10.2 electron volt will be absorbed by hydrogen atom. So large number of different wavelengths are passing through the hydrogen atoms. Some of these wavelengths, some of these photons will be absorbed by hydrogen atoms. होगा क्या? In the spectrum recorded, ठीक है, in between the continuous spectrum, ठीक है, in between the continuous spectrum we'll get some dark lines where corresponding to the photons which are absorbed by the hydrogen atoms. In between the continuous spectrum, we'll get some dark lines. What will these dark lines correspond to? These dark lines will correspond to the photons that are being absorbed by hydrogen atoms. These dark lines will correspond to the photons that are being absorbed by hydrogen atom. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, etc. Okay? So we can say that the absorption spectrum appears slightly differently from the emission spectrum. The absorption spectrum has dark lines separating bright regions. We can say that almost the entire photographic film gets illuminated because of the source of the white light, which contains all the different wavelengths. But some waves are absorbed by hydrogen atom. Some photons of characteristic wavelengths are absorbed by hydrogen atom, corresponding to which we get some dark lines. Okay? Whereas for the emission spectrum, we can say that it has emission spectrum kaisa dikhta hai? It has dark regions separated by bright lines. It has dark regions separated by bright lines. ठीक है, अगर हम सेम सब्सटेंस का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेजर कर रहे हैं, तो जो लाइंस ब्राइट मिलेंगे हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में, एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे विल गेट डार्क लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. दे विल बी एग्जैक्ट नेगेटिव ऑफ ईच अदर. जहां जहां हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस मिलेंगे, मतलब जो वेवलेंथ्स, जो फोटोन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम फोटोन्स विल बी एमिटेड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, आ रहा है समझ में ये? ठीक है, तो emission spectrum is the spectrum of emitted radiations, and which radiations will be emitted whenever electrons jump from a high energy level to low energy level, a photon will be emitted. Energy of the photon is equal to the difference in energies of the two levels. Similarly, ठीक है, when photons are incident on an atom in ground state, the electrons may be excited to high energy level and some radiations may be absorbed. ठीक है, and again the energy of the photons absorbed will be equal to difference in energies of the different energy level. या अब डायग्राम बना लो. ठीक है, अब डायग्राम बना लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का. All those wavelengths that are absorbed in the absorption spectrum, ठीक है, will be emitted in the emission spectrum. The emission spectrum and absorption spectrum look negative of each other. इफ यू कैन, मतलब पता नहीं किसी ने यूज किया है कि नहीं, अभी ऑब्सोलीट हो गया. इन ओल्ड एजेस, मतलब पुराने टाइम में, व्हेन वी वेर किड्स, हम जब बच्चे थे, तो फिल्म बेस्ड फोटोग्राफी होती थी. मतलब एक कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म हम ऐड करते थे, फिर कैमरा क्लिक होता था, वो फिल्म पे नेगेटिव इमेज बनता था, फिर उस नेगेटिव इमेज को प्रोसेस करने के लिए हम लोग स्टूडियोज में देते थे. स्टूडियोज में उसको प्रोसेस करके उसका पॉजिटिव इमेज बनाते थे. तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना, मतलब फोटोग्राफी में बहुत कॉमनली यूज करते हैं. तो these photographic films, the photographic film has obtained in absorption spectrum and the photographic film has obtained in the emission spectrum, they are negative of each other. ठीक है, absorption spectrum is mostly bright separated by dark lines. ठीक है, emission spectrum is mostly dark separated by bright lines. ठीक है, clear है ये absorption and emission spectrum?
टर्न करूं पेज? क्या बोल रहा है विरोके? कैन यू रेज योर हैंड्स? हाँ बोल भाई, क्या बोल रहा है? यू आर वेरी, योर वॉइस इज वेरी लो. Hello. या बेटर, बट स्टिल नॉट ग्रेट, बट ठीक है. Yes, sir. Sir, so I was asking only emission spectrum of hydrogen is there, right? And no absorption spectrum. No, no, even absorption spectrum of hydrogen does exist. ठीक है, we can measure the hydrogen absorption spectrum, or we can also do the emission spectrum. Both can be experimentally measured and recorded. Okay? We normally study only about the emission spectrum. ठीक है, absorption spectrum थोड़ा difficult है, but theoretically possible है. Yes. ठीक है, theoretically we can measure both absorption and emission spectrum. There are some practical limitations for absorption spectrum. Therefore, we generally don't talk about absorption spectrum of hydrogen atom. ठीक है, so let's not talk about those practical limitations. Absorption spectrum में जब देखते हैं ना, तो केवल एक ही लाइन मिलता है हमें. Absorption spectrum practically does not very useful for us. ठीक है. Theoretically, it is possible. Both absorption and emission spectrum are possible. Now we'll study about emission spectrum of hydrogen. एक सेकेंड रुकना. We'll talk about emission spectra of hydrogen.
We'll study about the calculations of different wavelengths that can be emitted in these hydrogen atoms. Okay, and we can classify these photons into different series. Okay. We get some photons which are very close in their wavelength. The wavelengths lie in a particular range. And based on the range of wavelengths, we classify them in certain series. होता क्या है? Practically देखो, when the hydrogen sample is excited, it excited either by electric voltage or by thermal energy. All the electrons in the hydrogen atom will be excited to high energy levels. ठीक है? Let us draw these energy levels by horizontal lines. याद करो हमने ये एनर्जी लेवल डायग्राम पहले भी ड्रॉ किया है. ठीक है. जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, difference between the energy levels will keep on decreasing. This is the infinity. Suppose this is the ground state. ठीक है, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमने हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो व्हेन the hydrogen atoms are heated to very high temperatures or they are subjected to very high voltage, all the electrons will be excited to high energy levels. These excited electrons, when fall back to low energy levels, photons are emitted. So let us study what kind of different transitions can take place. Transition मतलब ठीक है, between which two energy levels electrons can move. Electrons के पास क्या option है? The electrons are falling back from high energy states to low energy state. ठीक है, तो we'll consider a sample containing a very large number of hydrogen atoms. ठीक है, if we have a very large number of hydrogen atoms, electrons ठीक है can take different travel path when they go back from a higher energy state to the ground state. इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ठीक है हाई एनर्जी स्टेट से 7th ऑर्बिट से 8th ऑर्बिट से 10th ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट तक जाना है, इलेक्ट्रॉन में गो डायरेक्टली टू द फर्स्ट ऑर्बिट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन ठीक है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लास्ट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक आ रहा है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन गोज डायरेक्टली फ्रॉम इंफिनिटी टू, एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम द इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट डायरेक्टली, या फिर पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम इंफिनिटी टू 3 एंड देन 3 to 1. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है. इलेक्ट्रॉन में गो फ्रॉम इंफिनिटी टू 2 एंड देन 2 to 1. तो ऐसे देयर कैन बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो वी कैन हैव अ 3 to 1 ट्रांजिशन, वी कैन हैव अ 2 to 1 ट्रांजिशन, वी कैन हैव अ 4 to 1 ट्रांजिशन एंड सो ऑन. ठीक है, मैं सारे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं. ठीक है, all those electronic transitions which start from a higher energy level but end at n equal to 1, end at n equal to 1, they form a series of photons or series of spectral lines in the spectrum. ठीक है, which series is often known as the Lyman series. Similarly, ठीक है, all those photons which fall back to the second orbit from any other higher orbit, to the second orbit from any other higher orbit, these series of lines is called the Balmer series. ठीक है, all the lines of Balmer series will be very close. ठीक, all the lines of Lyman series will be very close to each other, but the Lyman series lines and the Balmer series lines ठीक है, will be at a significant distance from each other. Similarly, we have ठीक है Lyman series, Balmer series, then we have
Paschen series, we have bracket series, these are the different series of lines observed in the hydrogen spectrum, the emission spectrum of hydrogen atom. Lyman series, Balmer series, the Paschen series, the bracket series, the Pfund series, and the Humphrey series. Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Pfund, Humphrey. ठीक है, कैलकुलेशंस हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. The wavelengths or the energy of these photons can be calculated as delta E will be equal to E naught into Z square. हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर तो 1 है, ठीक है, तो E naught ही रहने देंगे. E naught का वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/n1 स्क्वायर, one by n2 square, where n2 is greater than n1. The wave number or the wavelength 1 upon lambda will be equal to r into rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. We have already written these two formulae. ठीक है, यहाँ पे n2 will be greater than n1. ठीक है, एक एक करके डिफरेंट सीरीज की बात करेंगे. तो लाइमन सीरीज में n1 का वैल्यू क्या आएगा 1, n2 का वैल्यू क्या आएगा 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी. तो n2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n1. यहाँ पे कन्वेंशंस में वी डिफाइन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ रेस्पेक्टिव सीरीज. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज? First line of Lyman series. What is the first line? Conventionally, the first line is the lowest energy line. Lowest energy line, the highest wavelength. Lowest energy will correspond to maximum wavelength. First line is the lowest energy line. Which line will be the lowest energy line? किस line की energy lowest होगी? ठीक है, the line that will correspond to the minimum difference in energies. Lyman series में minimum difference in energy किस किस दो ऑर्बिट के बीच में होगा? ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में. तो फर्स्ट लाइन विल बी, ठीक है, विच ट्रांजिशन विल करेस्पॉन्ड टू द फर्स्ट लाइन? तो n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1 ट्रांजिशन, द 2 to 1 ट्रांजिशन करेस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट लाइन. आ रहा है समझ में ये पॉइंट? which will be the second line. Second line will be the next higher energy line in the Lyman series. Okay? It will be the line obtained by transition of electron from 3 to 1. So 3 to 1 transition will correspond to the second line of Lyman series, known as the alpha line. The first line is also called as the alpha line. First line or the alpha line. These conventions are also still used. ठीक है, फर्स्ट लाइन और द अल्फा लाइन, सेकेंड लाइन और द बीटा लाइन. ठीक है, नोट कर लिया ये? टर्न करूं पेज? Lowest energy, maximum wavelength. This will correspond to the lowest energy and maximum wavelength. What are these lines? Spectral lines. ठीक है, each spectral line corresponds to a particular wavelength. ठीक है,
photons of different wavelengths will be dispersed by different angles by the prism, and they will be incident on the photographic film at different locations on the photographic film, resulting in different spectral lines. So each photon of a different wavelength will result in a different spectral line in the spectrum. Conventionally, the first line is regarded as the lowest energy line. The first line of Lyman series is the line arising due to transition of electron from 2 to 1. Turn karu page. So definition wise, second line of Lyman series will be due to the 3 to 1 transition. एक मिनट रुकना. The last line will correspond to the maximum energy and the minimum wavelength. We can use these conventions for every series. Let us find out the range of wavelengths for the Lyman series. Okay. Let us calculate lambda minimum. Lambda minimum calculate करने के लिए energy maximum calculate करेंगे. Energy maximum will be equal to E infinity minus E1. This will be equal to E naught into Z square by N square. So 13.6 electron volt. Lambda का value निकालेंगे will be 1240 upon energy in electron volts, 1240 by 13.6. कितना value आएगा ये? This is around 91 nanometers. 91.17 to 91.2 nanometers. Now let us calculate the lambda max. Lambda max will correspond to the energy minimum. Energy minimum will be equal to E2 minus E1. This will be equal to E naught into 1 by 1 square minus 1 by 2 square. So 3 by 4 E naught. 3 by 4 E naught, 3 by 4 into 13.6 is equal to 10.2 electron volts. Lambda max का value आ जाएगा 1240 upon 10.2 is 121.56, so 121.6 nanometers. So we can say that all lines of the Lyman series lie in this range. Their wavelengths will be between 91 nanometer to 121 nanometer. Okay. Visible range, visible light में wavelengths का range starts from 450 nanometer. Around 450 nanometer,
400 nanometer, 400 nanometer to 750 nanometer, effectively 390 nanometer to 750 nanometer. That is the visible range, 390 nanometer to 750 nanometer. These wavelengths are less than the visible range. Wavelength lower than the visible range belongs to the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. Wavelength is less than the visible range. Frequency is more than the visible range. Energy is more than the visible range. So these lines, the lines of the Lyman series, okay, have energies more than the violet light, have wavelengths less than the violet light, okay, have frequencies more than the violet light. They belong to the ultraviolet region of electromagnetic spectrum. So we can say that all lines of the Lyman series of hydrogen spectrum, the emission spectrum of hydrogen atom, all lines of the Lyman series belong to the ultraviolet region of electromagnetic spectrum. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? आ रहा है समझ में ये पॉइंट? पेज टर्न करूं? पेज टर्न करूं? एक मिनट रुकना.
Just wait a minute. Next, we'll talk about the Balmer series. Lyman series हो गया. Then we'll talk about the Balmer series. Balmer series, ठीक है. N1 is equal to 2, N2 is equal to 3, 4, 5, 6 up to infinity. ठीक है. सेम कन्वेंशंस फॉलो करेंगे. फर्स्ट लाइन विल बी करस्पॉन्डिंग टू द 3 to 2 ट्रांजिशन. ठीक है. इसको हम अल्फा लाइन भी बोल सकते हैं. इसके लिए लैम्डा अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस विल करस्पॉन्ड टू मिनिमम एनर्जी लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स का वैल्यू और लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. ठीक है. इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये. लेट अस फाइंड आउट द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस फर्स्ट. Energy of the 3 to 2 transition will be equal to E naught into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. So 1 by 4 minus 1 by 9 is 5 by 36. So 5 E naught by 36. ठीक है. ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 by 36 into 30. This is around 1.88 और 1.89 EV. ठीक है. इसके लिए लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा. This is lambda alpha of or lambda of first line of Balmer series 1240 upon 1.89. This is 656 nanometer. This lies in the range of 390 to 760. This is lies in the visible range. ठीक है. तो this is visible. It is a blue colored blue नहीं, red colored light. Second line corresponds to 422. We'll find out E422 will be equal to 13.6 into 1 by 4 minus 1 by 2 square minus 1 by 4 square. So 1 by 4 minus 1 by 16 is 3 by 16. 13.6 into 3 by 16. ये वैल्यू आ जाएगा. This is 2.55 electron volt. ठीक है. Lambda 422 will be equal to 1240 by 2.55. 1240 by 2.55. This is around 486 nanometers. This is found to be green in color. Third line of the Balmer series. Third line is 5 to 2. Energy of 5 to 2 will be 13.6 into 1 by 2 square minus 1 by 5 square. ठीक है. This comes out to be 13.6 into 1 by 4 minus 1 by 25. So this is 25 minus 4, 21 by 100. So 13.6 into 21 by 100. 2.856 electron volts.
ठीक है, फिर इसका वेवलेंथ निकालेंगे। टर्न करूं पेज? Let us find out its wavelength. Lambda for 5 to 2 transition will be 1240 upon the energy was how much? 2.856. 1240 upon 2.856. This is 434 nanometers. 434 nanometer is found to be blue in color. So 13.6 into 5 by 36. The value comes out to be 13.6 into 5, 1.89। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। 36 minus 4, 32 by 36। एक सेकंड, एक सेकंड। 1/2 square minus 1/6 square। 9 minus 1/36, 8/36। This is 3.02 electron volts। ठीक है, lambda of 6 to 2 will be 1240 by 3.02 is around
लैम्डा 7 to 2 अगर निकालेंगे तो पहले एनर्जी 7 to 2 निकाल लेते हैं. So we'll write this point. Only the first 4 lines of Balmer series belong to the visible region of electromagnetic spectrum. All other lines lie in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. ठीक है. तो कभी कभी देखना बुक्स में कैसा लिखा रहता है कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट है, बामर सीरीज विजिबल में है, बट बामर सीरीज के सारे लाइंस विजिबल रेंज में नहीं आते. ओनली द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ बामर सीरीज लाई इन द विजिबल रेंज. ठीक है. सिमिलरली वी कैन डू आवर कैलकुलेशंस फॉर पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज एंड सो ऑन. ठीक है. तो मैं बाकी सब एक साथ लिख देता हूँ. पास्चन सीरीज ये थर्ड था हमारा. पास्चन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और n2 का वैल्यू विल बी 4, 5, 6, etc. Similarly, if we talk about bracket series, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 का वैल्यू हो जाएगा 4, n2 का वैल्यू हो जाएगा 5, 6, 7, etc. up to infinity. Then we have P fund series, and lastly we have Humphrey series. P fund series
N1 is 5, Humphrey series N1 is 6. Accordingly, Pfund series N2 will be 6, 7, etc. And Humphrey series N2 will be 7, 8, etc. ठीक है, clear है ये? We'll end this lecture here only. ठीक है, अभी के लिए मैं देखता हूँ we can solve something or not. Because spectrum अभी तक पूरा complete नहीं किया हमने. There is more in spectrum. There are more formulae, more calculations. Some calculations we have done. Some more calculations we have to still do in this chapter. Therefore, अभी मैं homework को मैं एक बार booklet देख रहा हूँ. मैं check कर लेता हूँ. If you can solve something, मैं कुछ questions mark करा दूँगा. रुक जाओ एक मिनट. Those who have doubts to ask, they can wait and stay. ठीक है, जिनको कोई डाउट नहीं है वो बस एक मिनट रुक जाओ, मैं होमवर्क बता देता हूँ. Then you may leave. ठीक है, अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ. जस्ट रिवाइज दीज नोट्स. ठीक है, अभी कोई होमवर्क नहीं है. आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज वी हैव ऑन सैटरडे के बाद मैं होमवर्क दूंगा. ठीक है, तो मैं अभी रेगुलर लेक्चर एंड कर रहा हूँ. दोज हु हैव डाउट्स कैन स्टे बैक. ठीक है, दोज हु हैव डाउट्स, एडिशनल डाउट्स टू आस्क, दे कैन स्टे बैक. ठीक है, तो आई कंटिन्यू इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स वेट करो. आई एम अलाउइंग एवरीवन जिनको डाउट्स नहीं है, दे मे लीव द लेक्चर. ठीक है, देन विल कंटिन्यू विथ द डाउट्स. ठीक है. बोलो वीर, ओके, क्या डाउट है तुम्हें? रुको रुको, लेट मी अनम्यूट यू. Now you may unmute and speak. Yes, we're okay. Sir, FBO question number 32 I've written in the FBO question number 32. Let me solve it. I think last time we solved in the class also. FBO question number 32. If the same energy is supplied to electron in the ground state of hydrogen as well as He plus, electron jumps to fifth main shell. Fifth main shell is fifth orbit in the hydrogen, then the final orbit of electron in the He plus. ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन एटम्स के लिए देखो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, वापस से सॉल्व कर रहा हूँ. एक बार मैंने ऐसे सॉल्व किया है, फिर भी मैं वापस से सॉल्व करके बता रहा हूँ. हाइड्रोजन एटम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन गोज फ्रॉम, ठीक है, n = 1 to n = 5. वी कैन फाइंड आउट कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है. फोटोन की एनर्जी अगर निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू E5 - E1. इसमें कोई डाउट है? no sir. ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी E0 × 1 - 1/25.
E naught into 24/25. तो we can E naught के टर्म्स में रहने देते हैं अभी. Yes, sir. Energy value is 24 E naught by 25. ठीक है. Now let us consider a sample of He plus ions. That is also in the ground state. ठीक है. That is also in the ground state. अभी सपोज ग्राउंड स्टेट से अगर सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएंगे तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ग्राउंड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी एनर्जी ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी E2 minus E1. इसकी वैल्यू आ जाएगी E naught into Z square 2 square 1 minus 1/4. ठीक है. ये आ जाएगा E naught into 4 into 3/4 is equal to 3 E naught. Yes, sir. Even to take into the first excited state, बाकी excited states की भूल जाओ, second third excited state की भूल जाओ. Ground state से अगर first excited state पे भी ले जाना है तो भी energy required is 3 times E naught, and we are giving how much energy? Only 24/25 E naught, which is much lower than even 3 E naught. So by absorbing this much energy, electron in helium cannot be excited even to the first excited state. That means it will remain in the ground state. That photon will not be absorbed by He plus ion. That photon will pass through He plus ions. Okay. आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है. तो the electron in He plus will remain in the ground state. तो 32 का आंसर 1 आ जाएगा. Okay, sir. 1 मतलब ऑप्शन B. B. Any other doubt? No, sir. Thank you. ठीक है. ठीक है. No one else there? Ansh, you have any doubt? Yes, sir. I had one doubt in FPO. Yes. Tell me the question number. Sir, 26. 26. 1 second. Question number 26. What is the frequency of revolution of electron present in the second Bohr orbit of hydrogen atom? What is the formula for frequency of revolution, Hans? Sir, I'm not sure. That's why I tried finding the formula in the notes, but It is I V don't by think I 2 noted pi it down. r. Frequency of revolution is V upon 2 pi r. You have done it? ठीक है. Notes में हमने I think lecture 9 में किया है. I'm not sure. Lecture 8 या lecture 9 में किया है. मैं पेज नंबर भी बताया था तुम्हें. मतलब मैंने जो नोट शेयर किए है ना, Yes, sir. उसमें कहाँ किया ये भी बताया था. You have done it. 1 second. So, but like, can we do this? Okay, never mind. बोलो 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 क्या बोल रहा बोलना भाई. क्यों शर्मा रहा है? No, sir. Like, जब मैंने ट्राई किया था तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल के उसको देखो देखो wavelength- कंसेप्चुअली करते हैं. ठीक है. तुम्हारी बात सही है. लेट अस डू इट कंसेप्चुअली. फॉर्मूला नहीं पता तो भी करते हैं. ठीक है. The frequency Yes. of revolutions is number of revolutions per second. Number of revolutions per second will be 1 upon time period of revolution. Yes, sir. Time period of revolution is time taken to complete one revolution. So distance covered in one revolution is 2 pi r. Time will be distance by speed. Speed is v. So 2 pi r upon v is the time period of revolution. Yeah. Okay. Okay. If time period of revolution is 2 pi r upon v, the frequency of revolution is v upon 2 pi r. Now we can solve for v. V is v naught into z by n. R is a naught into n square by z. Yeah. Put the values and solve it. आ जाएगा. Yes. V naught is 2.18 into 10 to the power 6. अभी एक क्वेश्चन में भी किया था हमने. ये 3.14 into a naught का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम. ऐसा यूनिट्स में 10 raised to minus 10. ठीक है. और ये फाइनली आ जाएगा z स्क्वायर बाय n क्यूब. हाइड्रोजन एटम n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ऑर्बिट नंबर इज Second सेकंड orbit. 2 क्यूब. ठीक है. हो जाएगा. Yes, sir. एनी अदर डाउट? No, sir. No other doubt. चलो. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir.